use len or range. ओके, वॉइस इज ब्रेकिंग। अरे रे, अभी भी नहीं आ रहा है क्या? अभी आ रहा है, नहीं आ रहा है? लेट मी राइट। ओके, ऑडियो चेक, ऑडियो चेक, 1 2 3 4, ऑडियो चेक, ऑडियो चेक। कैन, cool, audio is cool. Okay, fine. Coming back to your question, mhm, in which condition, right? In which condition we use we use I in like that for loops? Hmm, in which condition we use length or length or range? Conditions, conditions कैसे बताएं? Coming back to range, a range of 5. So let's assume a scenario that particularly यूज केस वाइज होगा ये। जैसे अगर मुझे एक यूज केस आपको देना रहा, जैसे वेरी सिंपल यूज केस मैंने यहाँ पर दिया था कि आई वांटेड द अफर्मेशंस टू रन 5 टाइम्स, तो मैंने बस रेंज ऑफ 5 ले लिया। ठीक है, रेंज ऑफ 5 ले लिया। इफ आई वांटेड टू रन दिस 50 टाइम्स, तो आई वुड हैव सेड रेंज ऑफ 50, right? रेंज ऑफ 50, तो ये 50 टाइम्स रन हो जाएगा। So in a very special case where when you want to when you want to run any operations those many times, okay, those many times, so this is what you will decide कि ये ऑपरेशन कितने बार रन होना चाहिए। ठीक है। now when we talk about length of range of length, ठीक है, range of length, usually length of string लेते हैं हम। ठीक है। So sometimes like whenever we deal with the textual data, okay, whenever we deal with the textual data or even though list हो या जो भी हो, अगर यहाँ पर लिस्ट होता और उसकी वैल्यू जो भी उसके अंदर वैल्यू रहेगी, so स्पेशली you don't want to exceed the loop more than, let's say ये 6 times चल रहा है, right? So you don't want the loop to run 7th or 10th time. So अगर आप यहाँ पर बस बोल दो range of 10, it will go beyond that, and but it will not get that value, right? Because there are only 6 elements in the list. Okay, so in that special case, जब आपको बस आपके particular data के हिसाब से ही आपको loop run करना हो, right? It is like a it's a loop, right? Meaning हर बार कोई data है यहाँ पर and you have a worker here, ऐसा कैसे worker है? You have a worker here, तो जो जो आप बोल रहे हो, जाओ उसको विजिट करके आओ, है ना? इसके ऊपर विजिट मीनिंग इसके ऊपर काम करके आओ, राइट? लेट्स से यू हैव दिस लॉन्ग डेटा, उसके अंदर 10 ही एलिमेंट्स है, बट यू सेड रेंज इक्वल्स टू 50। okay, range equals to 50, does that make sense? No, in that case you will say range of length, लेंथ मीनिंग इसकी जो भी लेंथ, इसकी लेंथ 10 है, राइट? सो ओनली 10 टाइम्स रन करो, राइट? सो इन दैट स्पेशल केस यू विल गो फॉर रेंज ऑफ लेंथ। ओके, सो मोस्टली जब whenever you will be working on actual data set, so it will be like very clear what you need to do, right? What you need to do. So that is it. Any more questions on yesterday's topic? Any more questions on yesterday's topic? There are any more questions? Let me know. Okay, no, all clear. Cool. If you still have questions, just interrupt me. I will answer. Okay, whatever.
I know. If I don't know, I will also let you know, or I will get to know, and I will explain you again. Okay. So now today we are going to learn loops on uh, tuple, okay, and set and dictionary dictionary. So although we don't know what these values are, जो आप बोल रहे हो ये डेटा टाइप मुझे पता ही नहीं है, बट अभी समझ लो कि कुछ ऐसी सेट है, टपल है, डिक्शनरी है, बिकॉज इन द फ्यूचर वी विल वेरी स्पेशली dive into tuple, set, dictionary and so on. ठीक है. So first example for tuple. Tuple कुछ इस तरीके से होते हैं. How they look like this. Let's say 2, 3, 4, 5, 6. Okay. This is called as tuple. मैंने इसलिए tuple यहाँ पर लिखा इसलिए नहीं. I can also say num. This is also a tuple. But anything which is in round braces separated by comma is called as tuple. ठीक है. कुछ इस तरीके से समझ लो. अभी के लिए मैं यहाँ पर इसको tuple 1 ही रखता हूँ so that whenever in future or in the near future when you read this you'll get अच्छा ये tuple है. But in coming lectures हम tuple सीख ही लेंगे. तो आपको ये समझ में आ जाएगा. ओके. इसके ऊपर हमें for loop चलाना है. For I in tuple 1 वही सेम हिसाब है. राइट. सेम हिसाब है. प्रिंट आई कुछ भी अलग है. आई एम जस्ट सेइंग प्रिंट आई. इसके अंदर के सारे ही एलिमेंट्स मुझे दे दो. ओके. इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स मुझे दे दो. इसके अंदर और भी स्पेशल केस रहा तो व्हाट व्हाट वी विल डू. हम टपल जब देखेंगे तब सीख लेंगे. लेट्स से सेट कैसे रहेगा. सेट विल लुक लाइक दिस. 3 2 4 और 1. ओके. दिस इज कॉल्ड एज सेट. ओके. दिस इज कॉल्ड एज सेट. But you see, this is unordered, right? Unordered. मैंने 2 3 4 लिखा था यहाँ पर 1 2 3 4 आया. यहाँ पर मैंने 2 3 4 5 लिखा, यहाँ पर मुझे 2 3 5 4 आया. दिस इज ऑर्डर. लिस्ट भी ऑर्डर है, राइट? जो हमने कुछ लेक्चर्स पहले देखी, राइट? सो ये अनऑर्डर, ये सब चीजें तब तब भी सीखेंगे. सो फॉर फॉर सेट ऑल्सो हिसाब सेम है. For I in set 1, print I. If I run this, I will get all the items, but not necessary जो आप ये फैशन में लिखे उसी फैशन में मिलेंगे. Okay? So there is no guarantee कि सेम फैशन में मुझे मिलेंगे. Alright? Alright? Okay. So टपल के लिए भी सेम हिसाब है, सेट के लिए भी सेम हिसाब है. But now डिक्शनरी के लिए क्या सेम हिसाब है? क्या डिक्शनरी के लिए सेम हिसाब है? Let's say रोहित 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 ने करे है 100 रन. राहुल विराट आया तो क्या है राजा. राहुल विराट ने करे 200, विराट ने करे 300 रन. तो दिस इज हाउ माय डिक्शनरी लुक्स लाइक. सो हर एक अलग अलग दिख रहा है. टपल कुछ राउंड ब्रेसेस में दिख रहा है. सेट करली ब्रेसेस में दिख रहा है. डिक्शनरी also looks same in the curly braces but it has key and value pair. Okay, it has key and value pair, key and value pair. की वैल्यू मीनिंग इसका एक एक की है. अभी क्या बोलूं मैं इसको यहाँ पर. आ, मतलब कोई भी स्टूडेंट है उसके मार्क्स है, कोई भी क्रिकेटर है उसके स्कोर्स है. मतलब हर एक ऐसी चीज जिसकी एक वैल्यू रहेगी. ठीक है. एक इस चीज की वैल्यू रहेगी. जैसे अगर मैं यहाँ पे क्रिकेट बैट लिख दूंगा उसकी वैल्यू रहेगी 5,000. वॉच लिख दूंगा उसकी वैल्यू रहेगी 20,000. है ना. कार लिख दूंगा उसकी वैल्यू रहेगी 1 CR. लाइक दिस there are only values, like keys are there which has a values, and that set is called as a dictionary. Okay, which is already like which is inside a curly braces. ठीक है. इसको again when we will learn dictionary हम बहुत अच्छे से इसको सीखेंगे. But now coming back to our topic which is for loop. For I in dictionary 1, मैं बस ऐसे बोल दे रहा हूँ. For I in dictionary 1 आ तो गया, बट क्या आया है. I've only got the keys. Okay, I've only got the keys. But what if sir, I want to know values also, और इन दोनों को मिलाकर बोला जाएगा items.
ओके, इन दोनों को मिला जाएगा आइटम्स। तो let me get this here, print. So now ये मेरा की है। Okay, this is my key, this is my key, this is my value. Okay, this is my key, this is my value, this is my key, this is my value। इन दोनों को मिला के हम कहेंगे आइटम। ओके, इन दोनों को मिला के हम कहेंगे आइटम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है अभी के लिए एटलीस्ट। व्हेन वी विल लर्न डिक्शनरी तो ये आपको रट जाएगा। इसको की बोलेंगे, वैल्यू बोलेंगे, एंड इस इन दोनों को मिला के आइटम बोलेंगे। तो आपका क्वेश्चन है कि यार मैंने तो ये वाला हिसाब लगा दिया जो हर एक का हिसाब है, सेट का भी है, टपल का भी है, डिक्शनरी लिस्ट का भी है, स्ट्रिंग का भी है, रेंज का भी है, बट हियर आई एम जस्ट गेटिंग द कीज। व्हाट अबाउट द वैल्यूज? ओके, सो चलो वैल्यूज देखते हैं। फॉर आई इन डिक्शनरी, ये समझ रहा है, ये एआई जो भी है, ये हम टाइप कर रहे हैं, समझ रहा है। फॉर आई इन डिक्शनरी डॉट वैल्यूज। ओके, फॉर आई इन डिक्शनरी डॉट वैल्यूज, इफ आई रन दिस आई विल गेट ओनली वैल्यूज, आई विल गेट ओनली वैल्यू। सर ये आपने डॉट वैल्यूज करा है, फिर कीज के लिए भी कोई तो रहेगा वैसे। फॉर आई इन डिक्शनरी वन डॉट कीज, कीज का भी फंक्शन है। इफ यू राइट और इफ यू डोंट राइट इट इज द सेम। ठीक है, तो ये वाला सेम चीज यहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक है, ये वाला सेम चीज यहाँ पर आ जाएगी। बट सर आपने भी कहा तो इन दोनों को मिला के वैल्यूज, इन दोनों को मिला के आइटम कहा जाता है। व्हाट अबाउट द आइटम्स? इफ आई वांट दीज keys and values together, how should I get it? You should get for I in dictionary one dot items print I. Okay, for I in dictionary one dot items print I. If you run this, you will get Rohit 100, Rahul 200, and Virat 300. Okay. हर्षित फ्रॉम यूट्यूब से भाई आप किस कोड एडिटर यूज करते हो? भाई हेलो, हरडू आल्सो से हेलो। मैं कोड एडिटर वैसे वीएस कोड करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो, बट राइट नाउ आई एम जस्ट टीचिंग इन द गूगल कोलैब। ठीक है, टीचिंग इन द गूगल कोलैब। ऑलराइट, सो हमने ये कवर कर लिया, बहुत बढ़िया। क्या कवर कर लिया? टपल के लिए भी सेम हिसाब लग रहा है फॉर आई इन टपल वन, डिक्शनरी के लिए भी सेम हिसाब है, और सेट के लिए भी सेम हिसाब है फॉर आई इन सेट वन प्रिंट आई, या फिर यहाँ पर जो भी चला दो। राइट, यस्टरडेज फ्रॉम यस्टरडेज टॉपिक वी हैव लर्न दिस, ये भी चला दो, उसके नीचे ये चला दो, है ना? ऑल द फंक्शंस, ऑल दिस कोड यू कैन ड्रॉप इट जस्ट बिलो इन दीज। ठीक है, दीज विल ऑल्सो वर्क। सो आई विल लेट यू एक्सप्लोर दोज थिंग्स। ठीक है, आई विल लेट यू एक्सप्लोर दोज थिंग्स। एंड डिक्शनरी के लिए हमें क्या पता चला है? दिस इज अ की, दिस इज अ वैल्यू, and combine this is items. So if you want keys, you can directly say, if you want values, you need to say dictionary dot values. If you want keys again, you can say dictionary dot keys. If you want items, you can say sorry, if you want items, you can say dictionary dot items. Then what you will get? You will get all the items. Okay, you'll get all the items. Any confusion here? Is it clear? Is it not? What is keys dot items? Keys dot items. Okay, cool. Let me tell you what is keys. Clear. Cool. Yes, I think this should be clear, by the way. This was my dictionary. Okay, this was my dictionary. So we understood this. Rahul is a key, 200 is a value. Virat is a key, 300 is a value. Okay, so combine this are called as items. Okay, what are called as items. So if I want keys, I will say dictionary dot key. If I want values, I will say dictionary dot value. Okay. If I want items, मतलब ये combine this one, I will say dictionary dot items. Okay. This is it. इसके ऊपर है ही नहीं. So if I want keys meaning Rahul. If I want keys, so I will say, if I don't mention, then also I will get keys. If I mention, then also I will get Rahul. Okay, meaning this keys. If I deliberately mention dict one dot values, I will get values. Values what? These. Okay, and items का तो वही है कि if I say
items, I will get both of the things. Okay, both of the things. Any confusion, question? Is it clear? I think it's clear for her. What about others? Any questions, guys? Any questions here? Alrighty. और किसी का भी क्वेश्चन रहेगा तो लेट मी नो. द अल्टीमेट फन जोन से हाय भाई. हेलो हेलो भाई. ओके, गोइंग अहेड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट स्टॉप मी. ठीक है, जस्ट स्टॉप मी. सो नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन है enumerate. enumerate. So this is related to for loop only. Okay, this is related to for loop, but ये एक और एक्स्ट्रा फंक्शन के साथ आता है. ओके, इट कम्स विथ वन मोर फंक्शन. सो हम क्या कह रहे थे अब तक? फॉर आई इन समथिंग, फॉर आई इन इटरेटर, राइट? इटरेटर ऐसे कुछ बोल रहे थे हम, राइट? प्रिंट आई. इटरेटर क्या रहता था हमारा? ये सब चीजें, these all things. स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल देखा हमने, सेट देखा, डिक्शनरी देखा, रेंज देखा. Okay, but now when we talk about enumerate, for I in enumerate, may rate it right? For I in enumerate of, for example, generative AI, ऐसे बोलते हैं मैंने. But when you only say I, enumerate supports two things. एक support, it support index and it supports value. Okay, it support index and it supports value, and it also returns index and value. Okay, if it can give index, it can give index and values also. So if I run this, so what will happen? So you have this Gen AI. Gen and AI. So इसका index है 0, 1, 2, 3, 4. Okay, so this is my value, this is my index. Okay, this is my index, this is my value. So enumerate क्या करता है? अब तक हम बस ये वैल्यूज उठा रहे थे. इट ऑल्सो गिव्स द इंडेक्स दैट इज 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4. Okay, so it gives you these things also. So when I say gen AI for enumerate, if I run this, it will give me इसका वैल्यू क्या है? फर्स्ट का जी है, एंड इसका इंडेक्स है 0, देन 1 2 3 4. ओके, देन 1 2 3 4. सिंपल है. ओके, समझ में नहीं आया? आया जो भी है, लेट मी नो. वन मोर एग्जांपल देते हैं, फिर थोड़ा और समझ में आया नहीं. आई का. ओके, लेट्स से फॉर आई कॉमा वी इन enumerate एनी टपल. तो टपल 1 ले लेते हैं यहाँ पर. टपल 1 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. ओके, सो आई यानी इंडेक्स, वी यानी वैल्यू. सो इट विल गिव 1 का 2 3 4 5 6. टपल 1 यही लिया है ना इसने, तो ये रन ही नहीं किया. वेट, हाँ ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये वैल्यूज होगी, एंड दीज आर कीज, और नॉट कीज एक्चुअली, इंडेक्स. ये इंडेक्स है. इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो आप. एफ ऑफ स्ट्रिंग index is I and value is V. Index is I, value is V. So you will get index is 0, value is 1. Which one? This one. Okay, which one? This one. It can run on tuple, list, or string directly. Okay, or range, or whatever you specify there. Okay, whatever you specify there. Sir, what if I don't ask? I just only want index, I don't want value. So if I run this, इस बार हम लिस्ट पे चलाते हैं, लिस्ट 1.
एंड हमारा लिस्ट वन है यहाँ पर। कुछ इस तरीके से अलग नंबर्स लेते हैं, 88, 99, 66, 33. Okay, we'll run this and I will just delete this. So I don't, although if I query like this, index and values, index and value, I only want index. I only want index. So it will say index 0, index 1, index 2, index 3. So there are only four elements. Okay, there are only four elements. Getting this, getting this, let me just give you one question. थोड़ा सा tricky. So I will say string one equals to, I will say mm, data sci, data sci, data science basically. And if I say for I in, अच्छा आया था क्या? For index enumerate, for index and value in enumerate of string one, print index is this and value is this. So what should I get as an answer? थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्या लिखने के लिए? Screen freeze for me. Is it for everyone? Is it for everyone? Can anyone let me know? Wi-Fi का मेरा issue है guys. No, okay. Let me switch the Wi-Fi sometimes. Let me switch. थोड़ा सा problem है. Hope you understand. ठीक है. मेरा इसका आंसर दे दो यार कोई. Just give me answer to this. Or why I am not getting the voice. Hmm, शायद अब आ जाए. This is not on mute, right? Not on mute. Okay, someone said 0, 1, 2, 3, 4 data science. बढ़िया भाई. कितने 7 0 2 7. Anuja says index 0 is 0, data in is SCY, common, D common, and this, yes, this is right. Wow, Shiva Priya also says data and some space, and she may be writing the next also. Cool. All right. But yeah, if anyone else also typing, you can type. You have some time.